Welcome back, guys. अब हम करेंगे thermal properties of matter question 9 paper 2 5054. Let's start question 9. In many countries solid salt is produced by trapping seawater in large shallow ponds and letting the water evaporate. ठीक है ना? तो figure 4.1 shows salt being produced in this way. So salt is being produced. State two ways in which evaporation differs from boiling. अच्छा, first of all, evaporation differs from boiling. जैसे कि, for example, this is the body of water, and this is water, right? The evaporation will only occur on the surface of the body, right? While the boiling will occur all over the liquid. ठीक है ना? All over the liquid. ठीक है? But the evaporation will only occur on the surface. Second, only the boiling only occurs at a certain temperature. आपने सुना होगा boiling point is 100 degrees Celsius for water. So it only occurs at I mean a specific temperature, right? But on the other hand, evaporation occurs on a range of temperatures, right? It doesn't only occur on one temperature, it occurs on a range of temperatures. ठीक है ना? आगे evaporation जो होती है ना, वो cooling provide करता है क्योंकि ये जो particles होते हैं on the surface of the water or the liquid की body जो है, उसके ऊपर जो surface area होता है, the heat particles को वो absorb करती हैं for in order for them to escape. ठीक है ना? अगर एक ये liquid की body है, right? और यहाँ heat particles है, the heat energy will be absorbed in order for the particles to escape the surface. ठीक है ना? The heat energy will be absorbed in order for the particles to escape the surface of the body of water. So it produces a effect of cooling. So इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं. चले जी, आगे चलते हैं. Describe in terms of water molecules what is happening as the water evaporates. As the water evaporates. अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, ये गंदा सा यूज कर लेते हैं. What do you call it? Diagram. If you if Even if you can call it a diagram, it's not even. Okay, anyways. So what happens in evaporation? Evaporation में क्या, mainly the process is of the liquid evaporating, meaning leaving the body of water. ठीक है ना? जिन बॉडी के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू मूव आउट, टर्न इनटू अनदर स्टेट, गैसियस स्टेट, और वाटर वेपर्स बन जाते हैं. ठीक है ना? व्हेन दे हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हेन दे आर लाइक फास्टर, राइट? तो दे हैव specific amount of kinetic energy, they will leave the surface of the water, or it will leave the rest of the body of water, and वो बाकी की body of water को, of course, the average temperature of that body of water will decrease, right? The average energy in that body of water will decrease as the high energy particles have left the body of water. So yeah, fastest molecules with greatest kinetic energy escape. ठीक है ना? Or slowest molecules with the smallest kinetic energy remain. Okay, average speed of the remaining molecules decrease, as I told you. Molecules gain kinetic energy and escape, and that kinetic energy is gained through the surroundings. ऐसे ही इसीलिए evaporation में cooling effect आता है, क्योंकि जो heat energy होती है ना, that is absorbed by the water, which will cause the rest of the environment to be cooler. अच्छा, आगे. ये तो हमने किया ही नहीं. एक सेकेंड. ये कॉपी और यहाँ पेस्ट. अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर दें. I'll explain you personally in that comment section, of course. State why the pond used in this process have a large surface area. अच्छा ना, evaporation it depends on of certain factors. कि ना सब, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ये जो सारी फिजिक्स होती है ना, इट इज हैपनिंग इन योर रियल लाइफ, बट यूर लाइक, आप
इसको वो नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते इन योर रियल लाइफ। इट ऑल हैपेंस इन योर रियल लाइफ। तो अब आप देखते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक छोटा सा इतने बड़े सरफेस एरिया वाला आपने टब लिया एक, और आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है ना। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और आपने एक टब लिया, और इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है ना। इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। हु डू यू थिंक विल evaporate फर्स्ट? द वन विद द लार्जर सरफेस एरिया, राइट। इसलिए आप देखते हैं जब बारिश होती है छोटे छोटे पॉडल्स बन जाते हैं, बट द नेक्स्ट डे देर ऑल गॉन। दैट इज बिकॉज ऑफ द evaporation and the larger surface area. When the surface area is small, evaporation will occur on a smaller surface area. Due to there being a smaller surface area, evaporation का जो effect होगा that would be smaller as well. But the larger surface area, the larger the effect of evaporation, because on a larger amount of surface area, ज़्यादा energy can be gathered around and ज़्यादा energy can be absorbed by the water. आप इसको conceptualize करें, इन दोनों में से अगर इन दोनों का पानी का वॉल्यूम या मास इज द सेम, इसमें और इसमें, द ओनली डिफरेंस इज द सरफेस एरिया। हु डू यू थिंक विल evaporate फर्स्ट? अगर आप देखें एक ग्लास ऑफ वाटर लें और आप एक बड़ा जो टब नहीं होता जिसमें पानी मतलब जिसमें कपड़े वगैरह धुलते हैं कुछ होता है, वो लें, उसमें एक पानी का ग्लास डालें और यू हैव अ glass of water. Which one will evaporate first? Of course, the tub will evaporate first. So yeah, ये हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ हम कर देते हैं ऐसे पेस्ट। ये क्या हुआ? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आपने याद रखना है क्योंकि इट कैन नॉट फिट इन दैट अमाउंट ऑफ जगह। इसको अगर थोड़ा नीचे कर दें तो इट माइट। एक सेकेंड रुक जाए, छोड़े बल्कि इधर ही रहने दें। अच्छा, स्टेट व्हाई दिस मेथड ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन डज नॉट वर्क वेल इन अ कंट्री विद अ कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि evaporation is dependent on one thing which is surface area, but there are several other factors which evaporation is dependent on, like temperature. जितना temperature होगा ना, उतना the higher the temperature, the higher the मतलब जो thermal energy है, if that is higher, there is an increase in kinetic energy, right? और काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दैट विल अलाउ द पार्टिकल्स टू एस्केप द बॉडी ऑफ वाटर. So the more the energy, the more the kinetic energy, right? Of course, it is a type of energy. The more the kinetic energy, the more particles will escape, right? The body of the water, because it is totally dependent on the kinetic energy. अच्छा, while we're at it, I'll tell you a few other factors. कि अगर humidity is present, the presence of water vapors in the surrounding air, humidity affects the evaporation. Higher humidity reduces the rate of evaporation, जैसे कि it makes it harder for the water molecules to escape into the already moist air. ठीक है ना? If the if the air is already moist, the water vapor will have the water will slowly evaporate. The effect of evaporation will decrease. And another one will be the movement of air. अगर हवा चल रही होगी ना, moving air removes the water vapor molecules from the liquid surface. जो लिक्विड की सरफेस होती है उससे वाटर वो वेपर मॉलिक्यूल्स हटा देता है, सो इट प्रमोट्स एन हायर एवापोरेशन, ठीक है ना। जो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी से वो escape कर रहे होते हैं ना पार्टिकल्स, उनको हटा देता है, उनको हवा के अंदर डाल देता है, उनको पहले escape करवा देता है. So that allows the body to gain more kinetic energy as the particles with the higher kinetic energy have left. So that are the three, four factors on which evaporation is dependent on. I hope you understood that. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.